Alhamdulillah. And we're here this morning, and there's a wonderful atmosphere, is there not? Alhamdulillah. The sun is rising, people are waking, showering. Jalsa is coming to life on this its final day. That's Alhamdulillah. नाज़रीन ये जैसे कि 3 रोज़ इंतहाई तेज़ी से गुजर गए अल्लाह के फजल से सूरज अपनी आबोताब से जगमगा रहा है मालूम होता है जैसे जो हम अहमदी खुश हैं मुस्कुरा रहे हैं सूरज भी हमको देखकर मुस्कुरा रहा है इस वक्त और ये वक्त इतनी जल्दी से गुजर गया कि हज़रत खलीफा राबे रहमतुल्लाह तआला के एक शेर ये जहन में आता है कि लम्हात वसल जिन पे अज़ल का गुमान था चुटकी में उड़ गए वो तो यूर सुरूर शब हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला आप तक इस सुबह का जो माहौल है यहाँ पर उसका जायज़ा लें कुछ हद तक Jonathan, it's a wonderful morning again and all the guests are preparing for the first session inshallah and accommodation we have covered previously and other places but one of the areas is still left which hasn't been covered which is on the northeast side of the marquee. Yes. So yeah, we have the 5 main tents which we've already been to, but also people have their private tents where sometimes families stay in and it's a nice area, it's almost like a village atmosphere. So let's go over to brothers Hamad and Iyaz and let's take a look at let's call it the tent village. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Iyaz and Hamad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, Jonathan and Farouk. Our viewers join us here in a field in the middle of rural Hampshire on a cool September morning, and by the grace of Allah all around us has sprung up a tent village filled with the guests of the promised Messiah alayhi salatu wassalam, and it's absolutely incredible to think that these people have come from their homes to stay here in these tents for 3 days, giving up basic amenities in order to listen to the words of the promised Messiah alayhi salatu wasalam and the words of his Khalifa Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Sayyidullah Ta'ala bin Nasr Aziz, and to soak up the spiritual goodness, the spiritual riches that are abundant here at the Jalsa Salana, and echoes I think of those cold December mornings in Qadian and the Jalsa Salanas in Qadian as well, and absolutely wonderful sight to see. It's absolutely so faith-inspiring. To an average onlooker, somebody may say, to an average spectator, he may say that to live in tents for 3 days is something very inconvenient, and in September it gets quite cold during the nighttime, so why do these people come and inconvenience themselves? But this is the blessings of the Ahmadiyya Muslim community. These are the blessings of the promised Messiah alayhi salam, and the love and passion which all Ahmadis from around the globe have for Khalifatul Masih to be here. I mean, why do people come here and stay here in these tents? Because it's easier for them to join the 5 daily prayers that are offered here behind Huzur. They can come and offer tahajjud. So this is an absolutely spiritually elevating experience, and this is why people come here. नाज़रीन किराम, इस वक्त हम उस जगह पर हैं जिसे हम टेंट सिटी कहते हैं. वैसे तो हदीक़तुल मेहदी का ये इलाका जो है दौरान साल एक जंगल ही होता है, चारों तरफ दरख्त होते हैं और ऊपर खुला आसमान होता है, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा फजल व एहसान है और ये भी एक मौजज़ा है कि किस तरह चंद दिनों के अंदर अंदर हमारे कारकुनान जो हैं इसे ऐसे रंग में तैयार कर देते हैं कि यहाँ पर एक पूरे का पूरा शहर आबाद हो जाता है और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस शाख और खिलाफत के परवाने यहाँ पर आकर अपने टेंट सेटअप करते हैं, नस्ब करते हैं और यहाँ पर 3-4 दिन इधर ही हदीक़तुल मेहदी में गुजारते हैं. और मैं भी हमाद साहब से कह रहा था कि बज़ाहिर कोई शख्स ये कह सकता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है और हमारे ये जो मेहमान आते हैं ये काफ़ी दिक्कतों का सामना करते होंगे, लेकिन इन मेहमानों से पूछें जो यहाँ पर रहते हैं कि इनको कोई दिक्कत महसूस होती है, और हर एक कहेगा कि कोई दिक्कत नहीं, बड़े मज़े से यहाँ पर रहते हैं, तहज्जुद में शामिल होते हैं, नमाज़ों में शामिल होते हैं और उस रूहानी मायदे से फैज़याब होते हैं जो इस ज़माने में हज़रत खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिन नस्र अज़ीज़ के ज़रिए से हमें मिलता है. और ये जो जज्बा है ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत है. ये जो जज्बा है कि दिक्कतें कुछ भी नहीं है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई तालीम है. हमाद साहिब, you know, it's absolutely wonderful that when Jalsa Salana started in
1891, the promised Messiah alayhi salam started with very humble beginnings. There was only 75 people, and the promised Messiah alayhi salam was responsible directly. He made himself responsible to take care of the guests of the Jalsa Salana. And I'm reminded of that story where the guests came and the promised Messiah alayhi salam gave all of his bedding from his own home, and then he had one bed left for himself, which he also gave away. And then he took off his coat and gave it to his son, Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu, at that time Sahibzada Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. And he himself was sitting on a chair with his hands plucked between his, in his arms, because it was so cold and he couldn't sleep. And finally, a companion came and saw and said, "You have taken the beds of the promised Messiah alayhi salam and left him with nothing." And the promised Messiah was silent, but he had this deep passion to serve his guests. And today, we see that it is that very emotion which we see in the guests of the promised Messiah alayhi salam, that they're willing to give everything that they have to be here, and these difficulties mean nothing to them. It is incredible, and as you said, for someone looking from outside of this Jamaat, it's impossible for them to understand that devotion, that sense of giving up everything for Islam, for their faith. And these actually, for all of the people who are coming here, they're small sacrifices. They really are, and they don't perceive that they are lacking in anything at all. And it is actually absolutely incredible when one thinks about everything that is arranged here in Hadiqatul Mahdi for these few short days of the Jalsa Salana. The basic amenities are actually all here. The tents, places for people to sleep, but also the facilities for bathrooms and showers, and obviously the langar as well. So all of people's basic amenities are met, absolutely. Absolutely. So absolutely incredible. Farooq and Jonathan, we wish you were here to see this amazing site. It really is a blessed tent city. जज़ाकल्लाह हमाद साहब, इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे वहाँ पर ज़रूर, और अहबाब से मुलाकात का मौका भी मिलेगा हम सबको। नाज़रीन, जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि ये एक ऐसा जैसे एक नया शहर बसा दिया गया हो, तमाम इंसानी ज़रूरियात का हद्दुल मक़दूर कोशिश की जाती है कि ख्याल रखा जाए। जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि सुबह का वक्त है और अहबाब जो हैं वो नहा धोकर तैयार हो रहे हैं जलसे की कार्रवाई के लिए इंशाल्लाह ताला। और इस वक्त लंगर खाने में भी जहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमान आए हुए हैं, रूहानी ताम के साथ साथ हज़रत मसीह मौऊद का लंगर, जिसके मतलब ये इरशाद हुआ अल्लाह ताला का कि ये नान तेरे और तेरे साथ के दरवेशों के लिए है। वहाँ पे हमारे बाद साथी प्रेजेंटर मौजूद होंगे इंशाल्लाह, और हम उनसे भी बात करेंगे, देखेंगे कि आज नाश्ते में क्या है। Jonathan, things are actually building up very well for the first session, and all the guests are preparing for the morning proceedings, inshallah. It's more like a new city that's been established here on a temporary basis. Yes, alhamdulillah, it certainly is. And in every good city, there is, of course, good restaurants. So I wonder what is being cooked up this morning in the Langar Khana. Should we find out? Inshallah, yes. Let's go over to our brothers Mubarak and Kaleem. What's cooking up this morning? What's the menu in the Langar Khana, brothers? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A very warm welcome to all our viewers from around the world who are joining us here at the annual convention of the Ahmadiyya Muslim community. At the moment, we are coming to you live from the Langar Khana of the promised Messiah alayhi salam. This is the very same Langar Khana that was established over 100 years ago in Qadian. This is the same Langar Khana about which there were worries expressed at some times that there is not enough funding to feed the guests of the promised Messiah alayhi salam. Yet we see today that Allah fulfilled his promise to the promised Messiah alayhi salam when he said that this naan is for you and your companion Darwish. So today we see the world over there is the institution of Jalsa and Langar in so many countries of the world, and in Qadian and Rabwa this is a daily occurrence that people are coming to the Langar Khana of Hazrat Masih Maud alayhi salam and are being fed. Today at Hadiqatul Mahdi it is early morning, it's around 9 a.m. UK time, and the guests of the promised Messiah have not only stayed here but they're also making the journey here early to come and partake of the blessed, the barrag of the promised Messiah alayhi salam.
This Langar Khana provides food to people from all backgrounds, whether they be volunteers of the Jamaat, and even earlier on we saw the police who were here partaking of the blessings of the food of the promised Messiah alayhi salam. The food that comes here is prepared on site. We understand that there are teams working day and night to try and cook the food, piping hot, for these guests of the promised Messiah. The morning shift starts at around 6 a.m. where the cooks start to cook aloo chana here at Hadiqatul Mahdi in large degcha pots. These are pots which are quite large, and they are cooking a chickpea dish. At the same time, the teams in the roti plant at Islamabad start to prepare fresh naan, which is again piping hot at around 6 a.m. in the morning. This food is then distributed and comes to the Langar Khanas. At the moment, we're in only one Langar Khana. There are several Langar Khanas throughout Hadiqatul Mahdi, both on the men's and the ladies' side. We are in the main Jalsa at the Jalsa Langar. On the menu today, we have aloo chana, like I said earlier, and this is the chickpea dish. I don't know if the camera can actually show you what this basically is. It's a hot dish which basically has chickpeas and also naan. Alongside this, for those people who do not like this or do want something else, there's also cornflakes. There's also tea, which is provided 24 hours from tea stalls. So there's the option of toast or bread, and also marmalade and butter. So really, this is a nice place to be at the morning. There's the provision of all kinds of food for everyone who's coming here. Mubarak Sahab, how's the atmosphere here? And tell us a bit more in order. अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमारे कलीम साहब जो है वो अभी बता रहे थे कि हम इस वक्त खाना में मौजूद हैं, और ये वही लंगर खाना है जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ही फरमाया था। और आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हज़ारों लाखों अफराद जो हैं इस दस्तरखान से खाना खा रहे हैं। खाना खाने के लिए नाज़रीन बहुत सी मार्कियाँ लगाई गई हैं। मसलन जो यूरोपियन ममालिक से आए हुए अफराद हैं उनके लिए, जो कारकुनान हैं उनके लिए, जो माज़ूर अफराद हैं उनके लिए, ख़वातीन के लिए अलग अलग मार्कियाँ लगाई गई हैं। इस वक्त हम इन सारी मार्कियों में से एक मार्की में मौजूद हैं, जहाँ पे आप इस वक्त देख सकते हैं कि तकरीबन कोई 300 अफराद मौजूद हैं। आज नाश्ते में काफ़ी चीज़ें हैं, जो कि नान हैं, चने हैं, और ये आज जैम भी है, ब्रेड भी है, वीटाबिक्स भी है, कॉर्नफ्लेक्स भी है। और नाश्ते में मैंने जो आज इंतखाब किया है वो नान चने का है, और अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि आज जो है ये नाश्ता, ये जो नान चने हैं ये कैसे बनाए गए हैं। जी नाज़रीन, बहुत ही जो है लजीज बनाए गए। कलीम साहब, आप आज नाश्ते में क्या खा रहे हैं? मैं आपके साथ ही यही नान और खाता हूँ। Jazakallah, and let's take Assalamu alaikum here from the Langar Khana. जज़ाकमुल्लाह आसन जज़ा। मुबारक साहब और कलीम साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको अपना नाश्ता पसंद आएगा, और यकीन पसंद आएगा। नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा कि अल्लाह के फ़ज़ल से जलसे के कई शोबाजात हैं, और इन शोबाजात के पीछे बेइंतहा काम हो रहे हैं, और गैर मामूली तौर पर अल्लाह ताला के फ़ज़ल कार फरमा है, और इतने मुख्तलिफ़ शोबाजात के पीछे काम कार फरमा है कि इस वक्त में सबको कवर करना मुमकिन नहीं है। गोया कि सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। नाज़रीन, इसके अलावा इससे मैंने अर्ज़ किया पहले कि इसके अलावा और भी शोबाजात जलसे के साथ हैं। मसलन इंसानी ज़रूरत। अब मुझे बताया जा रहा है कि हमें चाहिए कि हम पहले आज के प्रोग्राम के मुतल्लिक़ कुछ बात करें, और उसके बाद मज़ीद शोबाजात की तरफ नज़र डालेंगे। नाज़रीन, आज अल्लाह के फ़ज़ल से वो अल्लाह के फ़ज़लों का दिन है कि जब हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला के वादे हम एक नई शान से पूरे हुए देखते हैं। जब आज दोपहर 1 बजे सैयदना ज़मील मोमिनीन अय्यूब ताला बिन नस्ल अज़ीज़ बनफ़्स नफ़ीस मर्दाना मार्की में तशरीफ़ लाएंगे, और हजूर के साथ 5 लाख से ज़्यादा नफूस इंशाअल्लाह ताला जमात हाय अहमदी आलमगीर में शामिल होंगे, और खिलाफत हक़्क़ा अहमदी इस्लामिया के हाथ पर बैत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम जो है वो इस तरह है कि अब से करीबन आधे पौने घंटे तक, जब पहले प्रोग्राम का आगाज़ होगा 10 बजे, हम आपको बराह रास्त आपको आज के पहले इजलास की कार्रवाई दिखाएंगे। सैयदना ज़मील मोमिनीन अय्यूब ताला बिन नस्ल अज़ीज़ जब 1 बजे तशरीफ़ लाएंगे मर्दाना जलसागाह में आलमी बैत के सिलसिले में, वो भी हम आपको बराह रास्त इंशाअल्लाह ताला दिखाएंगे। दुआ कीजिए कि तकरीब हम आपको अहसन रंग में पहुँचा सकें। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यूब ताला बिन नस्ल अज़ीज़ जब तशरीफ़ लाएंगे मार्की में आज के शाम के इजलास से पहले,
आप हजूर की मौजूदगी में बाज़ खिताबात भी होंगे जो मेहमान गिरामी करते हैं। हमने कल के भी हजूर के ख़िताब से पहले लोगों की तकारीर सुनी और इंतहाई ईमान अफरोज़ मौका था जब हमने जॉन पिगेट और डॉक्टर मार्टिन क्लार्क की नस्ल से हजूर के सामने वो मोदबाना अल्फाज सुने। Jonathan, shall we just go over the program very briefly as to what's happening today and what's coming up? Yes, certainly. So alhamdulillah, this is, of course, it's our final day of Jalsa. So while there is a hint of sadness in our hearts, there's also a great degree of excitement because, of course, today is a special day. But, of course, our coverage has started here. It started at 9 a.m. and our first session will be beginning at 10 a.m. in the main Jalsa Gar. There'll be a number of different topics being covered, particularly there's some very interesting lectures. So we'll be talking about obedience to Caliphate. This is one of the themes. Another one of the themes is relating to the Holy Quran and whether in fact it does promote a violent message, which of course, God forbid it doesn't. It teaches non-violence and self-defense unless of course there is aggression. And then we're also moving on to look at the writings of the promised Messiah. And finally, the progress of Ahmadiyyat across the world. So alhamdulillah, very good talks, not to be missed. And then after this is the thing which is really why we're all here in many ways. It is to take part in the international bayat. So this is particularly relevant for those new converts. We heard yesterday from Huzur that there are many of these which are coming into the Jamaat this year. Alhamdulillah. But then I guess also for everybody else, then it's a blessed opportunity to renew their pledge to Allah subhanahu wa ta'ala through the hand of their beloved Khalifa. May Allah strengthen his hand. And then finally we will have the final session. We'll have some distinguished guests with us, as well as the final address from Huzur. May Allah strengthen his hand. So alhamdulillah, so much to look forward to today. Alhamdulillah, and the blessings are not going to be counted at all, but inshallah we will keep discussing and talking for years and years to come about every day we see here. And alhamdulillah comes every year this day, and may Allah we are able to pledge ourselves to the obedience of Khilafat on a regular basis and be able to fulfill our pledge. Yes, alhamdulillah. नाज़रीन, साफ दिल को कसरते एजाज़ की हाजत नहीं, एक निशा काफ़ी है गर हो दिल में खौफ किरदगार। इसके बाद नाज़रीन हम आपको कुछ और मकामात दिखाएंगे इस जलसे के। मसलन जैसे हमने अर्ज़ किया कि बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं और सफाई की ज़रूरत भी होती है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अब दो और प्रेजेंटर्स, हमारे मेज़बान जो पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं, मुकर्रम याज साहिब और हमाद खान साहिब। हमाद साहिब, आप इस वक्त कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum. You join us here. We've left the tent city now. We're in the main Jalsa Gar complex. And yes, as we were saying before, every facility, by the grace of Allah, is available here for the guests of the promised Messiah, alayhi salam. There are bathroom facilities, shower facilities, and we have every facility here. And the organizers have tried to ensure that no guest of the promised Messiah feels any sort of discomfort. Despite the basic nature of the facilities, everything is here by the grace of Allah. And people are making their way to the showers, and then from there they're having their breakfast, as we saw Kaleem Saab showing us there the breakfast facilities that are available. And then they will make their way down to the main Jalsa Gar, which is here. We can see here the flag area as well. And one of the highlights of today, inshallah, is the Almi Bed. And I know that people are preparing themselves and will be spending their time in dua and in zikr in preparation for this amazing spiritual moment, the Almi Bed, which will be this afternoon. Absolutely. नाज़रीन कराम, इस वक्त हम 10 सिटी से आके मेन जलसा गाह के इलाके में आ चुके हैं। यहाँ पर हमाद साहब अभी बता रहे थे कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहमानों की मेहमान नवाज़ी करना अहम तरीन फ़राइज़ में शामिल है। और जैसा कि हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिल अज़ीज़ और तमाम खुलफ़ाए वक्त हमेशा ये कहते चले आए हैं कि मुंतज़मीन पूरी कोशिश करते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इन मेहमानों को
कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। ज़ाहिर है कि ऐसे इलाके में में ये जो आर्जी तौर पर इंतज़ामात किए जाते हैं उनमें वो सहूलत तो नहीं हो सकती जो एक घर में होती है, लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। गुसल खाने यहाँ मौजूद हैं, इसी तरह रहाइश का इंतज़ाम किया जाता है पूरे तौर पर, और पूरी कोशिश की जाती है कि जितना आराम और सहूलत पहुँचाई जाए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमानों को, उनको फ़राहम की जाए। आज के अहम तरीन प्रोग्रामों में से एक आलमी बैत भी है, जिस तरह हमाद साहब बता रहे थे, और तमाम जलसा के जो मेहमान हैं वो उसका इंतज़ार करते हैं और फिर एक बार दोबारा तजदीद अहद वफ़ा करेंगे और हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ की बैत करके फिर अपने अहदों को ताज़ा करेंगे और अपने ईमान को ताज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमें अभी पकड़ाए गए हैं बाज़ पैगामात जो आ रहे हैं। अल्लाह के फजल से हमने रिसर्च किया कल भी कि एक बहुत बड़ी तादाद में पैगामात हमें पहुँच रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के तरीक़ों से ये भेजे जा रहे हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने भी ज़िक्र फरमाया था कल कि जमात ही है जो इंटरनेट का इस्तेमाल सही तरीके से कर रही है इस वक्त ज़माने में। तो ये पैगामात हैं, इनमें से बाज़ मैं पढ़ देता हूँ। अक्सर पैगामात में हज़रत अमीरुल मोमिनीन को अस्सलाम वालेकुम कहा गया है। ज़बां पे बहरे खुदाया किसका नाम आया कि मेरे नुत्क़ ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। हमीदुल्लाह ज़फ़र साहिब प्रिंसिपल जामिअतुल मुबश्शिरीन घाना से लिखते हैं। उन्होंने उनकी ईमेल में ज़िक्र है जलसा सालाना की मुबारकबाद है और एमटी के ज़रिए तमाम दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं। फिर शम्सुल निसा खान साहिबा हमारी बहन हैं, उन्होंने हुज़ूर अनवर को सलाम भेजा है और एमटीए को मुबारकबाद दी है। सूरीनाम से लुबना लेक साहबा का ख़त आया, साउथ अमेरिका से। फिर मिर्ज़ा मसूद अहमद साहब डेनमार्क से उनका ख़त है, वो भी जलसे की कार्रवाई को बराह रास्त देख रहे हैं अपने ख़ानदान के साथ। और एमटी के प्रोग्राम जो हैं वो जलसागाह में महसूस करते हैं कि मौजूद हैं। सुलेमान दाऊद साहिब। फिर मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब कोलंबस से लिखते हैं, उन्होंने भी इसी किस्म के जज्बात का इजहार किया है। और सलाहुद्दीन साहब और नियाज़ अहमद साहब यूएस से, और इस तरह एक लंबी लिस्ट है। Jonathan, you've got some few messages for us to read out? Yes, I do. I've picked some of the most, well, alhamdulillah, they're all very exciting. But let's start with Ivory Coast. We've got Michel Pasha, Sharouk Pasha and Nofal Pasha. They're telling us that they are watching the Jalsa Salana from the Ivory Coast, watch all the programs, and they feel his speeches are wonderful. Alhamdulillah. We have Malik Irfan, Furkan, Farid, Arsalan, and all the family from Pakistan. They say, what an inspired speech from our beloved Huzur today. All thanks to the Almighty Allah and MTA, Huzur in the UK, but he is in our hearts. Alhamdulillah. We also have some Twitter. Let's take a look at some Twitter. Got some tweets. Abdul Matal says the programs of MTA are blended so nicely with the overall theme of Jalsa Salana. We also have lots of wasps. They also are enjoying the Jalsa, so watch out for them. And as well as this, we have, alhamdulillah, Nigeria. MTA is crystal clear here in Nigeria. It's like we're at the UK Jalsa. Well, alhamdulillah, that is a pleasure to hear. And we also have, alhamdulillah, Sufyan Faruqi. Alhamdulillah, 2 historic days witnessed live. Now watching replay on MTA. Emotions will be high at Bayard tomorrow. Can't wait. So alhamdulillah, this is a blessed thing. Firstly, that we can see the passion and the emotions of all of the Jamaat members from around the world, but also that Allah subhanahu wa ta'ala has enabled us to use this technology in order to serve him and to worship him. So it's just as Huzur instructed in the ladies session on Saturdays and not through. May Allah we obey Huzur's all instructions. I understand now it will be our privilege to go to the Jalsagah. We have Hamad Khan Sahib and Kaleem Sahib, Hamad Khan Sahib and Ayaz Mahmood Sahib there waiting for us, and they'll go through what's going on inside. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You join us here now in the Jalsagah, and by the grace of Allah, we're here on the 3rd day of the 46th Jalsa Salana in Hadikatul Mehdi, and one of the highlights of the Jalsa for many people who come to the Jalsa Salana, certainly for myself, is the Almi Bed, the international bed, at the hands of Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Sayyidullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, and it is an incredible spiritual rejuvenation, the bed.
as I'm sure people at home can imagine, there is a huge amount of preparation that goes into the international bed. And the organisers are working very hard, cleaning and clearing the space and setting up. And people can probably see behind us here the lines that are being set up for the international bed. And these lines are set up so that the people of different nations speaking specific languages can sit in a line and join together in the international bed. People watching at home will see that when the bed happens, people repeat the words of Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Sayyidullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz in their own language. So every time that Huzur speaks, his words are echoed in so many different languages. And for those watching at home, it may seem like a chaotic hubbub, but actually this is echoes of those words in all of these different languages, and it is absolutely incredible from a spiritual point of view to hear all of these different languages coming together. Absolutely. Echoing and repeating these spiritual words and pledging their allegiance at the hands of the Khalifa. Absolutely. Absolutely. नाज़रीन, इस वक्त हम जलसा गाह में मौजूद हैं, मर्दाना जलसा गाह में, और आज के अहम तरीन प्रोग्रामों में से एक वो प्रोग्राम है जिसका सारा साल इंतज़ार होता है और जो ख़ास तौर पर जमात अहमदिया बरतानिया के जलसा सलाना के साथ मुख्तस है, और वो आलमी बैत का प्रोग्राम है। हर साल इसका इंतज़ार किया जाता है और ये ऐसा एक ऐसी ईमान अफरोज़ तकरीब होती है कि जिसको कि ऐसे जज्बात होते हैं कि इजहार करना मुश्किल होता है कि किस तरह कई मुल्कों से और कई रंग व नस्ल के लोग एक हाथ पर जमा हो जाते हैं और हज़रत खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिन नस्र अज़ीज़ के हाथ पर फिर अपना तजदीद अहद वफ़ा करते हैं। और ये कोई आम तकरीब नहीं है, बहुत अहमियत का हामिल है। कुरान करीम में ख़ास तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी की बैत जो है वो गोया कि खुदा ताला का हाथ है, और यही हम एक नज़ारा यहाँ पर देखते हैं। तो इंशाअल्लाह आलमी बैत की तकरीब 1 बजे यूके के वक्त के मुताबिक मुनक़िद की जाएगी, तो उसमें हम सब इंशाअल्लाह MT इंटरनेशनल के ज़रिए से शामिल होंगे Inshallah. And I'm sure our viewers at home, certainly we are very much looking forward to taking part in the Almi Ba'ath, in the international Ba'ath, and you know, we're all getting excited now, and I'm sure that everyone here who's attending the Jalsa Salana is getting excited and looking forward very much to this amazing event. We're extremely lucky that we're going to have a discussion program now with some new MDs, some brothers who've had the opportunity to recently do Ba'ath at the hands of Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis. So now we're going to go over to that program.